Hello students and welcome back to BankExamsToday.com. My name is Ramandeep Singh and today we are going to do a demo session for Coal India MP 2025 Marketing and Sales. And the today's topic is customer lifetime value, very important topic. So questions are asked from this particular topic in every exam in which marketing management is a subject. So it's very important for marketing and sales profiles, right? So let's start the session. And before starting, let me tell you, Coal India MT 2025 courses are available for marketing, sales, legal, personal, and HR. Link to join the course is available in the description. This is the WhatsApp number where you can ask your doubts, and let's start the session. Hello students and welcome back to BankExamsToday.com. And today we are going to do an important session for IBPS SO Marketing Mains Exam. सो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हर साल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से. लास्ट ईयर भी आए थे, उससे लास्ट ईयर भी आए थे. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IBPS SO मेंस एग्जाम, SO मेंस फॉर मार्केटिंग, राइट? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव क्रैक्ड योर एग्जाम. येस्टरडे द रिजल्ट्स वर आउट, कल रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड आई होप आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो है प्री निकल चुका है, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डू कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. वी विल डिस्कस व्हाट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. We'll do some numericals. Last year भी कुछ एक numericals आए थे. You need to calculate the customer lifetime value. Very easy questions. You can easily do that. Like एक question आप easily 1 या 2 मिनट में easily कर सकते हो. Not very difficult at all. You just need to remember the formula. आपको एक formula है, उसी को याद करना है and that's it. Okay. So my name is Ramandeep Singh and I've been teaching on bank exams today from last 12 years. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts and I'm going to answer your doubts. Okay. IBPS SO Marketing Mains ka course, it's available on Bank Exams Today, in which we are covering the entire syllabus with the help of video classes, notes, quizzes, test series, and Power Capsule. Link to join the course is available in the description. It's a crash course. You can get it there, okay? So what is customer lifetime value? CLV. It is a metric that represents total net profit that a company, that a business can make from one customer's lifetime relationship. किसी भी एक कस्टमर से आप कितना पैसा बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई राइड रॉयल इनफील्ड, राइट? लेट्स से, आई मीन इट्स नॉट लेट्स से, आई राइड रॉयल इनफील्ड. तो पूरी लाइफ में हाउ मच मनी रॉयल इनफील्ड कैन मेक फ्रॉम मी? Maybe I'll be buying 4 bikes in my whole life, 4, 5, 6 bikes in my whole life. So per bike, how much money they are going to make? What is कितना पैसा हर बाइक से बचता है, और फ्यूचर में 10 साल बाद जो बाइक मैं खरीदूंगा उसकी आज तब जो प्रॉफिट कमाएंगे उसकी आज क्या वैल्यू है, राइट? सो दैट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. द टोटल नेट प्रॉफिट अ कंपनी कैन एक्सपेक्ट टू जनरेट फ्रॉम अ कस्टमर थ्रू इट्स एंटायर रिलेशनशिप, पूरे रिलेशनशिप के दौरान, राइट? That is CLV, and that's what you need to understand, and that's all about the definition of CLV. The total money, total gross, total profit, total net profit that a company can make from you during the entire relationship. Okay. So कुछ भी हो सकता है. Let's say you buy phones, और आप पूरी लाइफ में एप्पल के साथ, एप्पल के अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, एप्पल आईफोन्स, और लेट्स से you buy एयरपॉड्स और आईपैड्स, और इवन सम पीपल दे बाय लैपटॉप्स. What is your customer lifetime value? You can calculate that. That is a homework. So I already gave you an example. If somebody is buying 4 Royal Enfields, so उसकी क्या value होगी? And a real estate agent, you are buying one house in your whole life. एक घर आप सारी जिंदगी में खरीद रहे हो, and the real estate agent gets 1 lakh rupee from you, and that's what he is going to get from you. बिकॉज आप बार बार घर खरीदने नहीं जाओगे. इन केस यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस टू लिव इन इट. ओके, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो अदर कोई अलग बात है, लेकिन दैट्स अ थिंग. ये फॉर्मूला है. दैट्स व्हाट आई रिकमेंड ऑल माय स्टूडेंट्स. इसको आप ध्यान से पढ़ लें, याद से. एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र. ओके, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ठीक है. एक बार आप जब जाते हो किसी स्टोर पे, जो कितना रेवेन्यू आता है आपसे, ग्रॉस मार्जिन 20%, 10%, 30% जो भी है, डिवाइडेड बाय चर्न रेट. चर्न रेट क्या होती है? इफ़ देर आर 100 कस्टमर्स, 20 कस्टमर्स आर गॉन, 20 कस्टमर चर्न मतलब कितने लोग आपका बिजनेस छोड़ के चले गए, डिवाइडेड बाय कस्टमर्स इन द बिगिनिंग. ओके, दैट इज द चर्न रेट.
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर चर्न रेट. ओके, सो एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय चर्न रेट इज इक्वल टू the customer lifetime value. So it's very very important formula. We'll do a question here. A question भी हम करेंगे. What is churn rate? Churn rate is a metric that measures the annual percentage rate at which customers they stop subscribing to the services or employee they are leaving the job. That is churn rate. Okay, simple. इसमें deep में जाने की मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है. I don't think so. If there are 250 customers in the beginning, right, beginning of a month, and 10 you lose 10 customers, so how many what is the churn rate? It is 10 is a churn, 10 divided by in the beginning 250, right, multiplied by 100. That's how you get your churn rate. Very easy. ठीक है, कितने कस्टमर आपके लूज हुए डिवाइडेड बाय द टोटल कस्टमर एट द स्टार्टिंग पीरियड, start of the month, and multiplied by 100. That's how you get your churn rate. You can take the screenshot of this of this slide. This is really really important. Let me erase whatever I wrote here. Please take the screenshot of this slide and save it. It's very important. Okay, ये बहुत important है. इसी के by using this formula only, यही formula use करके आप सारे के सारे question जो है solve कर सकते हैं easily. Very easy. Okay. What is the customer lifetime value of a customer who spends $50 on average per month and has $10% monthly churn rate and 50% gross margin? Very easy question. You are going to get similar question in your exams. So just look at the formula again. Average revenue कितना है आपका यहाँ पे 50. फॉर्मूला के हिसाब से रेवेन्यू है 50, ग्रॉस मार्जिन है 0.5, चर्न रेट है 10% आई गेस, राइट. तो इसको करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं. 50 इज़ द रेवेन्यू, राइट. चर्न रेट कितना हो गया 0.1, 10% है मंथली. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मंथली ओनली. अगर रेवेन्यू मंथली बेसिस पे लगाया है तो चर्न रेट भी मंथली है. ओके, सो ग्रॉस मार्जिन इज 50%, राइट. सो इट्स 0.5. So let's find out the answers. You can easily do that, right? So it's like this. Okay, so $250 is the correct answer. D is the correct answer. Very very easy. बहुत ही easy था ये, बहुत easy था इसको करना, right? Same formula हर क्वेश्चन में यूज होगा. No need to change the formula. कुछ changes नहीं है. Okay. So एक चीज का ध्यान रखना है. If retention rate, if churn rate is 20%. If churn rate is 20%, retention जो बाकी के लोग बचे, that is retention. The retention rate is 80%. If churn rate is 20%, retention rate is 80%. If churn rate is 10%, retention rate is 90%. जितने लोग चर्न हो गए, जितने लोगों ने यूज करना छोड़ दिया, बाकी के लोग तो रिटेन हो गए ना. दैट इज रिटेंशन रेट. ओके, सो प्लीज नोट दैट. फॉर्मूला अगर देखना है तो देख सकते हैं, बट दैट्स अ सिंपल वे जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट इज द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर हु मेक्स 5 परचेजेस पर ईयर विद एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ $20. तो $20 मल्टीप्लाई बाय 5 ऑर्डर, $100 पूरे साल में परचेज करता है. रिटेंशन रेट है 80%. इफ रिटेंशन रेट इज 80%, चर्न रेट कितना होगा 20%. चर्न रेट इज 20%, 1/0.2. Profit margin 0.4. Now you can do this. Yes, you can do this. 100 multiplied by point, इसको यहाँ से उड़ा देंगे तो आपका बन जाएगा. That is $200 is the correct answer. C is the correct answer. Very easy question. Yes, $200 is the correct answer. इस question में what you learned that if retention rate is 80%, churn rate is 20%. If retention rate is 60%, churn rate is 40%. Okay. तो ये याद रखें, अगर 40% लोगों ने आपके प्रोडक्ट्स को यूज करना छोड़ दिया, 60% तो कर ही रहे हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर हु पेज मंथली सब्सक्रिप्शन फी ऑफ $10, churn rate of 5%, customer acquisition cost of $50, right? So monthly subscription $10, right? And churn rate 0.05. Okay, so let's just do this first. $200, okay, that should be the customer lifetime value, but you are spending $50 to acquire that customer. So
$150 is a customer lifetime value, because $50 acquisition cost भी तो minus करनी पड़ेगी ना, इसी में से निकालेंगे, right? So if you want to go in depth, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, you can pause the video here and you can read it here, but otherwise that's it. इतना स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है. इट्स एन MCQ पेपर. जस्ट डू दिस, यू आर गोइंग टू गेट द सेम मार्क्स. अगर इतना करेंगे तब भी सेम ही मिलेंगे, राइट? And what is the customer lifetime value of a customer who buys product with one time payment of $100? 20% probability of purchasing the same product in the future and a profit margin of 30%. Okay. 20% probability of purchasing the same product. See, retention ratio, retention rate को ही इसने बताया कि 20% चांस है इसको फ्यूचर में परचेज करेंगे, 80% चांस है कि खरीदेंगे नहीं. 80% चांस है कि वो खरीदेंगे नहीं, मतलब 80% जो है चर्न रेट है. 80% इज द चर्न रेट. ओके, सो $100 सेल वैल्यू एंड इफेक्ट ऑफ चर्न रेट 1 divided by 0.8 multiplied by the profit margin of 0.3. Okay. So you can easily do that. So 100 multiplied by 0.3 is 30 multiplied by 10 divided by 8. So you can easily do that. 5 divided by 4. So yeah, by doing this, you are going to get it like 37.5. Okay, that's your answer. Okay, very easy calculations. Calculators are not required, not allowed as well. ठीक है. डिटेल में अगर करना चाहते हैं, यू कैन डू इट है. एंड व्हाट इज द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर हु स्पेंड्स $40 ऑन एवरेज पर विजिट एंड ही इज विजिटिंग 4 times. सो 4 times का विजिट है, $40 ऑन एन एवरेज. रिटेंशन रेट इज 70%. व्हाट इज द चर्न रेट? इफ रिटेंशन रेट इज 70%, चर्न रेट हो गया 30%, राइट? सो 1/0.3 मल्टीप्लाइड बाय रेफरल रेट. सो उसका बेनिफिट मिल रहा है 1.1. सो ये कुछ नया सीख रहे हैं. रेफरल रेट इज गिवन 1.1. ओके, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. सो जस्ट डू इट 160 मल्टीप्लाइड बाय 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर ऊपर. So 160 multiplied by 11 divided by 3. Just try to do this and you're going to get your answers. It's around 586 something. Okay, 580, 590. You can take the answer there. Okay, 586, 585 के तकरीबन आ रहा है. So you can take the answer. Okay. Options normally दूर ही होती हैं. So which of the following is not typically considered while calculating the customer lifetime value? Purchase value, churn rate, डिस्काउंट रेट तो यूज़ होती हैं. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ नॉट जनरली यूज्ड इन वाइल कैलकुलेटिंग द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. वी डोंट यूज़ आर्ट. ओके, डिस्काउंट रेट भी कई बार यूज़ हो जाता है, राइट? कई बार एग्जाम में डिस्काउंट रेट का भी ऑप्शन रहेगा, राइट? प्लीज़ नोट डाउन द व्हाट्सएप नंबर. दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर वेयर यू कैन आस्क योर डाउट and we are going to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. I hope you liked today's session. अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में पूछ सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, and I'm going to answer you. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.